Hello friends, in this video I am going to speak about the 3 study hacks. Okay, by using these 3 study hacks you can be productive in your studies. So the first study hack is to recognize your productive hours. Recognize your productive hours, like at what hours you are more productive. Some are productive in the morning, some are productive in during the day, and some are in the night. So what you have to do, like you have to analyze, you have to recognize your productive hours, and in that productive hours you can choose your most difficult subject or most difficult topic to study. Because what happens in productive hours, your mind will be more productive, you will be more active, and you can easily grasp the concept. अब आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, उसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रोडक्टिव आवर्स में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं माइंड से एंड फिजिकली भी. सो यू आर एबल टू स्टडी इन ए वेरी गुड वे. ओके, अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी गुड वे. सो when you adopt the most difficult task or difficult subject in that most productive hours, that task doesn't remain difficult. जब आप अपने उन प्रोडक्टिव आवर्स में अपना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक या फिर कोई डिफ़िकल्ट टास्क करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उस समय इतने एक्टिव रहते हैं कि वो खुद ब खुद आसानी से आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, आप उस आसानी से समझने लगेंगे, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं. ओके, सो दैट यू नीड टू फर्स्ट रिकग्नाइज लाइक विच इन आवर्स आर मोर प्रोडक्टिव. Okay, me mostly I am productive during the day and in the morning, not in the night. I feel sleepy. Now second hack which you can use is to keep your study space organized. Okay, we should keep our study space, our study table or our desk organized in an organized manner. Okay, because what happens, अगर आपकी बुक इधर उधर फैली रहेंगी तो फिर आपको रेस्टलेस फील होगा, इरिटेबिलिटी फील होगी, क्योंकि रूम में फैला फैला देखकर मूड ही नहीं करेंगे पढ़ने का. यू विल लूज इंटरेस्ट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, इन ऑर्डर टू व्हेन यू आर सिटिंग फॉर स्टडीज और टू डू एनी वर्क, यू शुड बी फील फ्रेश, यू शुड बी फील लाइक एंथुसियास्टिक. ओके, यू शुड गेट इंटरेस्ट. ये नहीं कि रूम में आए, बुक फैलाए हुए हैं, सब फैलाए हुए हैं, टेबल उधर, बुक्स इधर, मोर लाइक ए क्लटर, कचरा कुंडी की तरह सब फैला हुआ है रूम. तो वो देखकर ना आपका यू विल लूज इंटरेस्ट, यू विल फील रेस्टलेसनेस, इरिटेबल, एंग्री. ओके, सो इन दैट केस हाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल विल डिक्रीज when your study space is not organized or like disorganized way. Okay, so in that case what you have to do, you have to organize your study space, your study desk, so that you will be feel more enthusiastic, more interest. Okay, and your concentration level also definitely will increase. And when you organize your study space, you will be feeling attractive towards it to sit and study. Third hack is finding your learning style. Find your learning style. Okay, learning style का मतलब क्या है कि आपको किस तरह पढ़ना पसंद है. थोड़े लोगों को ज़ोर से पढ़ना पसंद है, थोड़े लोगों को तैरते तैरते पढ़ना पसंद है, थोड़े लोगों को वीडियोस देखते हुए पढ़ना पसंद है, थोड़े लोगों को सीइंग से, विजुअलाइजेशन से, इमेजेस से पढ़ना पसंद है. सो इट डिपेंड्स द वे यू वांट टू लर्न. ओके, some people learn by listening, some people learn by reading, seeing or doing. Okay, so you have to analyze like which learning style suits you. Some people study by listening to the music, audio, motivational music. Okay, जब मैं एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ मालूम, मोटिवेशनल म्यूज़िक लगा के कानों में सुनते हुए पढ़ती हूँ. दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी. या फिर तैरते हुए मैं पढ़ती हूँ, या फिर ज़ोर ज़ोर से भी पढ़े तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. ओके, we will be feeling more active. Okay, while we are lolly, when we are studying, we will be feeling more active. Okay, motivational music, because एग्जाम्स के समय स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है ना, पढ़ने का तो दिल ही नहीं बोलते, ऊपर से कैसी किसी की फीलिंग्स आती होती है. तो उस समय what you can do, you can use motivational musics, songs, and you can listen to them while studying. That will definitely going to help you. Okay, and some people now also they learn by writing. राइट ऑन द नोट्स, बिकॉज इतनी मोटी टेक्स्ट बुक्स रहती हैं,
आप हमेशा तो टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करते हुए एग्जाम्स के एंड मोमेंट पे तो रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो एंड पैराग्राफ्स वाइज रहते हैं टेक्स्ट बुक्स में, तो what you can do, you can make that paragraph in a flowchart manner and you can write it off, or in a flowchart manner make some notes or sticky notes पे important points लिख दो। तो इससे क्या होता है, when you are revising for your exams it become more easy, and when you are noting down or making a flowchart, वो आपके दिमाग में ना और अच्छे से वो पॉइंट्स घुस रहे होते हैं, you know, you will be feeling more, you know, into it। एक्टिव लर्निंग है, आपको ज़्यादा you know जाता है कॉन्सेप्ट जब आप उसको लिख के याद करते हो। वैसे तो हम सबका तरीका अलग अलग होता है, मैं थोड़े दोस्त तो खाली टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं बिना लिखे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू द वे यू वांट टू लर्न। ओके, इफ़ यू आर लर्निंग बाय राइटिंग सो इट्स नॉट ए बिग डील, ओके, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। And even I learn by writing like a flowchart manner, using sticky notes, highlighters, okay, using motivational songs I use during the exams to feel like motivated, and while walking in the room and studying loudly, that is also we can use. So it all depends like on the way we want to learn. Okay, so these are the 3 study hacks which you can use while if you feel restless or if you feel demotivated while studying, and to increase your productivity. These are the 3 study hacks. You should first analyze like which are your productive hours. Okay, at what time, at what hours you are more productive. Second is you need to organize your study space, because definitely it is going to help you. It will increase your concentration and focus while studying. Third, what you have to do is to analyze your learning style, the way you want to learn. You can learn by watching YouTube videos, or by writing in a flowchart manner, or by anything, the way you want to learn. Okay, so these are the 3 things, 3 study hacks which you can apply in your study routine or in learning new things. Okay, because these 3 study hacks can make your study, the concentration level, more productive. Okay, from 50 to 100% your productivity will increase. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट भी चाहिए। आप एक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्टिव और मोटिवेशन टाइप होता है हम लोगों के लिए भी। थैंक यू।